Okay. So let us now move on to the differentiation between abnormal loss and normal loss. So in yesterday's lecture, we had seen what is an abnormal loss and what is a normal loss. Abnormal loss is what? Loss due to unexpected activities, that is the natural calamities. And normal loss is an loss which occurs due to expected activities. Okay. So see, the first point of difference is nature. Yeah. It is accidental in nature, unexpected, whether this is an expected loss. Then sources or factors. Abnormal loss happens because of external sources, and normal loss happens because of internal sources. Okay. Then insurance, as I told you yesterday, normal loss cannot be insured. Okay, but abnormal loss can be insured up to certain extent. वो भी मैंने आपको बताया था कौन कौन से केसेस में abnormal loss insured हो सकता है. If it is loss by theft, loss by fire, तो उसका तो क्लेम मतलब इंश्योरेंस होता है, करेक्ट ना. थेफ्ट इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, तो टू दैट एक्सटेंट यू कैन मिनिमाइज योर लॉस. Estimation, it cannot be estimated in advance. Okay, obviously, yeah, you don't know, right, when which things will happen unexpected. The name itself is unexpected, मतलब कैसे हो सकता है वो, right? Next चीज़ क्या है? Whereas in case of normal loss, it is loss due to percentage on input quantity. So this is the formula for calculating normal loss. Percentage of raw material input quantity. Please don't forget this. For some solving it is very important. Okay. Then avoidance, because abnormal loss can be insured to some extent, so the loss can be avoided to some extent. And in case of normal loss, it cannot be insured, so it cannot be avoided also. Okay, got the connection? Understood? कनेक्शन समझ में आया? Great. Okay, now let us move on to the प्रोसेस कॉस्टिंग फॉर्मेट. ठीक है, तो चलो ये फॉर्मेट बनाइए. Prepare a process account, a ledger, the debit side and the credit side. Don't sit idle there. Huh? Draw up these things. Write down whatever is there on the screen. ओके, तो प्रोसेस अकाउंट में क्या क्या आएगा? पहले तो आपका कॉस्ट आएगा, आपका टोटल कॉस्ट पूरा डेबिट होगा. ओके, पूरा टोटल कॉस्ट डेबिट होगा. Raw material input, direct wages, direct expenses, and up to factory overheads. ये yesterday's lecture I had said this, right? C plus P equal to S, and this cost is what? Direct cost plus indirect cost up to factory. Direct cost में क्या क्या? Direct material, direct labor, direct expenses, ये सब डेबिट होगा. Out of this, if you see raw material input quantity, I have written in the quantity column. Obviously, because वो question में भी आएगा. जो भी आप रॉ मटेरियल इन केजीज यूज़ करोगे वो आपको डेबिट करना है. Okay, now see this debit side. Yeah. Normal loss. The journal entry, normal loss is a loss, obviously तो डेबिट होगा. तो journal entry क्या होगा? Normal loss account डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट. बराबर. तो इसलिए नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड पे.
Okay, journal entry is normal loss to process. Okay, so normal loss is further divided as loss in weight or scrap loss. This all we have done yesterday in theory. Are you able to recollect? समझ में आ रहा है? So how do you calculate the quantity column? Formula percentage of raw material input, and amount column you cannot get. ये भी कल मैंने आपको बताया था क्यों नहीं मिलेगा, या क्योंकि जो लॉस इन वेट होता है उसका सेलेबल वैल्यू नहीं होता है. देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू फॉर क्वांटिटी लॉस. एग्जाम्पल दैट आई गेव यू ऑल yesterday was, अगर मैं 10 liters ऑफ रॉ मटेरियल डालती हूँ, okay, and I heat the raw material to get the finished goods. Okay, so 2 liters go away in evaporation. So the output is 8 liters. So that 2 liters I cannot get it back. It has no scrap value. मैं सिर्फ उसको क्वांटिटी में वैल्यू कर सकती हूँ, अमाउंट में नहीं. समझ में आया ना? I cannot get back those 2 liters that I can resell it in the market. Is this clear to everyone? Okay. Now come to scrap loss. Okay, scrap loss का example also I had given you yesterday. वो क्लॉथ में से जो एक्सेस बच जाता है, चिंदी जो बच जाती है, तो मैंने क्या बोला था, वो चिंदी कहाँ जाती है? फर्नीचर वाले के पास. फर्नीचर वाले के लिए वो चिंदी क्या है? इट इज़ अ रॉ मटेरियल टू देम. दे यूज इट इन मेकिंग ऑफ देयर फर्नीचर्स. ओके, राइट, या सोफ़ा बनाना है तो सोफ़ा के अंदर दे पुट दोज स्क्रैप्स. So these type of losses which can be quantified as well as sellable in market. If you see, I have written it in the quantity column also, and I have written it in the amount column also. See, okay. Formula will not change for scrap loss as well as weight loss. It is same percentage of raw material input. Why? Because it is a part of, both are part of normal loss, and normal loss का calculation is percentage of raw material input quantity. Okay, एंड दिस पार्ट इज सेलेबल. तो इसका कैसे आएगा? ये जो आपको आंसर मिला, मल्टीप्लाइड विथ स्क्रैप वैल्यू. ओके, क्वांटिटी multiplied with scrap value. So whatever answer you get in this quantity column, multiply with it with the scrap value per unit given in the question. Okay. Am I clear about this? समझ में आया? Okay. Then this output will be given in the question. ये क्वेश्चन में दिया रहेगा. सी, आउटपुट. ठीक है, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. फाइन, या ओके. अभी ध्यान से सुनो. इन प्रोसेस कॉस्टिंग, फर्स्ट वी क्लोज द क्वांटिटी कॉलम. सी, यू कैन लुक हियर, आपको समझ में आएगा. आई हैव रिटन ईयर 1. सबसे पहले क्वांटिटी कॉलम क्लोज होगा. तो जब आप क्वांटिटी कॉलम क्लोज करोगे तो आपको या तो एबनॉर्मल लॉस मिलेगा या तो एबनॉर्मल गेन मिलेगा. आई रिपीट, yesterday I told you raw material input, say it is 100 kgs, output is say 80 kgs. तो जो 20 kgs है, balancing figure, that is abnormal loss. Okay, so that is what I'm trying to explain. इसका उल्टा भी हो सकता है.
raw material input 100 kgs, output 105 kgs. So there is a gain. So abnormal gain, balancing figure. समझ में आया? Don't mug it up. Remember it with logic. Great. ठीक है, या तो आपको एबनॉर्मल लॉस मिलेगा या तो आपको एबनॉर्मल गेन मिलेगा, दोनों में से एक, दोनों नहीं आएगा या प्लीज, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। देन यू विल हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट कॉलम बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, सी आई हैव रिटन हियर अमाउंट कॉलम बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने कल ही आपको बताया था, वो वाला, ये वाला। अगर इफ इट इज एबनॉर्मल गेन देन वी विल बी solving by this way, and if it is abnormal loss then we will be using this formula. Okay, fine. ठीक है, एक बार आपका ये हो गया उसके बाद you will close your amount column. Once you have calculated abnormal gain amount, you will then close the quantity amount column, मतलब the rupees वाला column. Okay, ठीक है। When you close the amount column, yeah, this will be your balancing figure. Okay, yeah, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? प्रोसेस अकाउंट फॉर्मेट इज क्लियर टू एवरीवन? Process account format is clear to everyone. Yeah, is the format clear to everyone? Okay. Last में this will, when you close the amount column, this will be your balancing figure. Yeah. Okay. Now, how to cross check your answer in exam? How to verify that whatever you have done is correct? Okay. Now listen carefully whatever I'm saying. When you are doing this part of the question, the last part of the solution, okay, if the cost price is same, okay, that means our answer is right. Now see how will I tell you this? Yeah. This amount divided by this quantity, you will get CPU, cost price of the process. Okay, say that, yeah, you get some answer, say the answer is 10 rupees. Okay, and if you divide this, you should get the same answer here. If the answers are same, that means your calculations are perfect. Okay. Similarly, if your answer is abnormal gain, you divide this, your CPU should be same. Okay. समझ में आया? The CPU of your output and the CPU of your abnormal loss or abnormal gain should be equal. Am I clear about this? Is this clear to everyone? Okay, fine. Great. Now write a note. ये लिखो. Write down this note.
First, note number one, raw material is introduced in the first process and thereafter output of every process account becomes raw material input for the next process account. ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर भी. ओके, नाउ से फॉर एग्जांपल ये क्या था, दिस वाज प्रोसेस अकाउंट, से दिस इज फर्स्ट प्रोसेस और सपोज मैं और एक प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगी. इफ आई एम मेकिंग वन मोर प्रोसेस अकाउंट. ओके, क्वांटिटी, अमाउंट, क्वांटिटी, अमाउंट. तो ये जो आउटपुट है ना, ये इधर रॉ मटेरियल बन जाएगा. और फिर सेम वही वापस से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब रिपीट हो. सेम नॉर्मल लॉस, एवरीथिंग. अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? समझा? So while doing sums, it will be more clear to you. Okay? So please note this down. Raw material is introduced in the first process and thereafter output of every process becomes raw material for the next process. Then output of last process is transferred to finished goods stock account. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में अगर आपके पास 3 प्रोसेस अकाउंट है, प्रोसेस 1, तो उसका आउटपुट प्रोसेस 2 के लिए रॉ मटेरियल इनपुट हो जाएगा. प्रोसेस 2 जब आप क्लोज करोगे तो उसका आउटपुट प्रोसेस 3 के लिए रॉ मटेरियल इनपुट हो जाएगा. एंड प्रोसेस 3 इज योर लास्ट प्रोसेस. या, तो उसका आउटपुट यू विल नॉट राइट एज आउटपुट, यू विल राइट बाय फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट. एम आई क्लियर? समझा? Okay, great. See the third part, cost price per unit, that is CPU. Okay, CPU is what? Cost of that particular product, of that particular stage of product. Okay, so CPU of the output transfer to next process should be same as the CPU for abnormal loss or abnormal gain. Okay, all the 3 points are clear to everyone. It's very important for sum solving. Great. Now let us come to the questions. Okay. Okay. Devanshi, I was trying to say the cost price of the output transferred to the next process should be same as the CPU for abnormal loss or abnormal gain. Okay. अभी सुन, तुम ये और ये डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? CPU मिल जाएगा. ओके, से इधर अमाउंट है 10,000, इधर है 500 रुपये और 500 क्वान्टिटी. ओके, so sorry, so say 10,000 divided by 500. So my CPU is how much? 20 rupees. Okay, so when you solve here, you should have the same answer. इसका और इसका CPU सेम होना चाहिए. समझा? क्लियर देवांशी? ओके, अगर सपोज एबनॉर्मल लॉस नहीं है, सब में एबनॉर्मल गेन है, तो जब तू इसको और इसको डिवाइड करेगी तो तुम्हारा CPU सेम होना चाहिए 20. ओके,
तो दिस इज हाउ यू विल क्रॉस चेक योर आंसर इन एग्जाम. ठीक है, और नहीं सेम आया मतलब तुमने कुछ रॉन्ग किया. लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कैसे, अगर हमारा वेरिफिकेशन स्टेप राइट नहीं आता है, ओके, एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, देन वी नो दैट वी हैव डन सम कैलकुलेशन एरर. इसमें भी वैसे ही है. अगर सी पी यू सेम नहीं आया मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन एरर्स हुआ है. ओके, so now let us move on to question. Okay, now as per your syllabus your sums are divided into three types. Okay, so this is the first type of the sum. I'll have to share these questions in your Google Classroom. Yeah, I know that. I will be doing that. Okay, just go through this. This is type 1 simple process account where outputs are given in the question. Okay, a simple process account where outputs are given in the question. Now just go through the question. Om Industries Limited is manufacturing a product which passes through three consecutive processes. So there are three process account, process 1, process 2, process 3. Okay? For the month of 31st January 2011. Okay? Next. Information, basic raw material is how much? 10 rupees per kg in the first process. 25,000 kgs. Output is given 24,000 kgs, 23,200 and 22,250. ठीक है. अब मुझे इनपुट मालूम है, मुझे आउटपुट मालूम है, तो व्हेन आई क्लोज द लेजर आई विल बी गेटिंग द बैलेंसिंग फिगर एज आइदर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन. Okay, so this is understood. Then process material, debit, direct wages, debit. Direct wages is how much? It is 80%, 70%, 60% of the process material. ठीक है. Factory overheads. Hmm. So we'll just calculate direct wages. 80% of 1,50,000. 1,50,000 का 80% कितना हुआ? 1,20,000. Next 2,70,000 का 70%. 2,70,000 का 70%. 1,89,000. Okay, next 3,50,000 का 60%. 2,10,000. Okay, next factory overheads. 80%, 90%, 75% of direct wages. Okay, so let us calculate. Direct wages कितना मिला? 1,20,000 into 80%. 96,000. Okay, next 1,89,000 का 90%. 1,70,000. 100. Next 2,10,000 का 75%. 1,57,500. Okay. Machine overheads will be debit. These are all factory overheads. Yeah. 22,000, 16,980 and 15,620. Am I clear with the calculations? समझ में आ रहा है? Okay, great. ठीक है. Normal loss दिया है 2%, 4% and 4%. स्क्रैप वैल्यूज दिया है 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ पर के जी. ठीक है. स्क्रैप वैल्यू पर के जी इन रुपीज़. नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. नॉर्मल लॉस इज गिवन टू यू, बट ये लोग ने क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि ये स्क्रैप लॉस है या वेट लॉस है. I repeat, in the question they haven't specified whether it is a scrap loss or it is a weight loss. Okay, can anybody tell me which loss is there here? कौन सा वाला लॉस है इस क्वेश्चन में? हमने इतना थ्योरी कर लिया है. Anybody can analyze and tell me
Which normal loss is there in the question? स्क्रैप लॉस दिया है या वेट लॉस दिया है? Anyone? Which loss is given in the question? Because they haven't specified. उन्होंने सिर्फ बोला है it's a normal loss. But normal loss में भी दो है ना, scrap loss and weight loss. तो ये कौन सा वाला loss है? Okay. No one wants to try. Yeah. Jinal, Devanshi, Shivam. Which loss is this? साक्षी, कौन सा लॉस है ये? सी स्क्रैप वैल्यू दिया है ना, कैसे पहचानोगे एग्जाम में? ये देखो, या वेरी गुड शिवम, इट्स अ स्क्रैप लॉस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, तो स्क्रैप लॉस, स्क्रैप वैल्यू दिया है ना, मतलब इट्स अ स्क्रैप लॉस. ठीक है. हाँ, अगर ये लास्ट लाइन नहीं होता ना क्वेश्चन में, तो सेम ये क्या हो जाता, वेट लॉस हो जाता. Because scrap value is given in the question, this question is of scrap loss. The second, if scrap value was not given in the question, then this would have been a weight loss का सा. Is this clear? समझ में आ रहा है? Okay, fine, great.